रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लि अलैहि। Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Today is the 10th of Ramadan al-Muazzam. 10 रमज़ान मुबारक है। वक़्त गुज़र रहा है। Time is flying. और आज पहला अशरा ख़त्म होने को आया है। Today is the last day from the first 10 days of Ramadan. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदके हमें आइंदा आने वाले अशरे का सही माने में उसमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा रोज़ों को रखने की तौफीक अता फरमाए। जिन हज़रात ने पिछले समय में रोज़े रखे अल्लाह तबारक व तआला उनको मज़ीद तौफीक अता फरमाए और उनके अमल में इल्म में बरकत अता फरमाए। Today, inshallah, we will discuss about Hazrat Lut alayhi salam. Hazrat Lut alayhi salam के बारे में पहले थोड़ा सा जिक्र किया था हमने। We talked about Hazrat Lut alayhi salam and we were talking about Hazrat Ibrahim Khalilullah. Hazrat Lut alayhi salam, he is the nephew of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Some say he was the आपकी खालाजाद बहन के बेटे थे या चचीजाद बहन के बेटे थे। कुछ कहते हैं आप आपके भतीजे थे। He was the nephew from the father side. तो इस तरह इनका चला है। About Hazrat Lut alayhi salam, many people still think, and some ulama, they believe in this, that Hazrat Lut alayhi salam, al-a'yadu billah, he believed in Ibrahim alayhi salam. He became Muslim after seeing the karamat of Hazrat Ibrahim alayhi salam being saved from the nar of Namrud, from the fire of Namrud. When he saw Ibrahim alayhi salam, that he came out alive, nothing did anything to him. Then Hazrat Lut alayhi salam believed in him. Before that, he was al-a'yadu billah, was not a believer. अब ये सोच इंसान की न जाने वो क्या सोचते हैं। I don't know what those kind of people think when they say something about a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas Allah has never mentioned anything like this in the Quran, and Prophet Nabi sallallahu alayhi wa sallam has not mentioned anything in Hadith. All the Anbiya Karam alayhi salatu wasalam, they were very pious people and they were pious from their birth. And not even a single prophet of Allah subhanahu wa ta'ala did worship any of the God other than Allah subhanahu wa ta'ala. Whether it was before they became the prophet or after they became the prophet, nothing like this happened in their entire life. Even thinking about this, it makes me feel that I don't know what kind of people, what going through their mind, or they are trying to please some other people, or they may have some wrong intentions which they want to take out of it. And that's why these kind of ulama and these kind of people, they say Hazrat Lut alayhi salam. He always believed in Hazrat Ibrahim alayhi salam, and he always was the companion of Hazrat Ibrahim alayhi salam from the child. When he was child, even then he was in the company of Hazrat Ibrahim alayhi salam. He stayed with Ibrahim alayhi salam, and throughout he always believed in Hazrat Ibrahim alayhi salam. When Hazrat Ibrahim alayhi salam gave him the da'wah, he accepted it.
and he knew he was a prophet even then. इनको भी पता था, लेकिन he stayed with Hazrat Ibrahim alayhi salam. अब जब आप रहे Hazrat Ibrahim alayhi salam से मिस्र से जब वापसी आ रहे थे, when Hazrat Ibrahim alayhi salam was coming from after getting married to Hazrat Hajra, and Hazrat Saira was alongside, and Hazrat Ibrahim alayhi salam had Hazrat Lut alayhi salam with him. Hazrat Lut alayhi salam के बारे में, when I mentioned last time, there was a hadith of Mubarakah which narrated by Sayyidah Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, that Hazrat Lut alayhi salam was the first to do the hijrah, to migrate with his wife. This is the only reference we have from the hadith of Mubarakah. There is no other evidence. कोई और evidence नहीं है. There is nothing written in the Tariq book. There is just only the narrations that we've taken. Those narrations come from Torah and Injil. In them, some mention that he was with his wife, some don't mention anything about his wife or Lut alayhi salam. अब इससे ये मतलब निकालना कि अगर बीवी ने हिजरत की है तो that means she is very pious, ये भी गलत है. और ये मतलब निकालना कि if somebody does the hijrat for the sake of Allah, he is not going to get rewarded. This is not the case. Every case is different, and there could be a possibility the time when she did migrate with Hazrat Lut alayhi salam, when she did the hijrat with Hazrat Lut alayhi salam, his wife, at that time maybe she was a pious woman at that time, or maybe she was a believer, but she was a doubtful believer. And when the azab came on Lut alayhi salam, she got destroyed in that azab. She got the punishment also. There could be many reasons. Inshallah, we will discuss about them today. आज उनके बारे में बात करेंगे, लूत अलैहि सलाम की बीवी के बारे में भी, क्योंकि वैसे तो कोई उनके बारे में खास रवायात मौजूद नहीं है. Now, when Hazrat Ibrahim alayhi salam sent Lut alayhi salam to preach his religion to a different area, he went different area, कुछ थोड़ा सा फासले पे, there was a place called Sodom. He went there, which was about 18 to 20 miles away from where Hazrat Ibrahim alayhi salam stayed. आप जहाँ रुके, आपने हज़रत लूत अलैहि सलाम को दूसरे शहर में भेज दिया, वो कुछ शहर जिसका उसका नाम सदूम आता है. तो वहाँ आप लोगों को तबलीग के लिए अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम ने आपको वहाँ भेज दिया. when he sent him there, तो वहाँ जाने के बाद अब हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम अपने अलहदा से तबलीग करते रहे लोगों को, और लूत अलैहि सलाम अपने तौर पर तबलीग करते रहे. When they carried on with their preaching, the time passed. Now Allah mentioned about the nation of Lut alayhi salam, the people of Lut alayhi salam, the ummati of Lut alayhi salam, the ummah of Lut alayhi salam. Allah mentions about them that they were in all kind of sins that you can think about. They were busy doing these kind of sins. हर किस्म का गुनाह जो इंसान सोच सकता है वो करते थे. The very common a few things amongst them कि वो एक तो बुरी बातें, गंदी बात किया करते थे. They used to talk fahsh things, they used to talk about bad things, और गंदी बातें वो किया करते थे. They used to rob people on the street, गलियों में लोगों को लूट लिया करते थे. They used to sit in the street and they used to disturb the people. They used to hit, they used to stone travelers, वो पत्थर से लोगों को मारते जो वहाँ से गुजरते थे. And they were busy doing shirk and bid'ah. Amongst them, one of the biggest sin they used to do, which no other nation have done since Adam al-Islam से लेकर किसी भी ने वो गुनाह आज तक नहीं किया था जो गुनाह लूत al-Islam की कौम मुब्तला होगी. अब उसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यूं फरमाया, वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतून अल-फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन. And Hazrat Lut alayhi salam said to them that you are busy in such a kind of bad sin which not even a single nation has committed before you. किसी ने भी आज तक पहले आज तक किसी कौम ने तुम्हारे जैसा ये गुनाह किसी ने पहले नहीं किया. आलम इंसानियत ने ऐसा गुनाह पहले नहीं देखा. तो जब उन्होंने कहा कि यानी अब क्या था गुनाह, इन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवतम मिन दून निसाई, and you are fulfilling your physical needs from human beings, from men, rather than going close to your own wives.
यानी औरतों के करीब जाने के बजाय अपनी नफसानी ख्वाहिशात को तुम मर्दों से पूरा कर रहे हो। इसके ये इनकी जो गंदगी हरकत थी, सबसे पहले ये बीमारी लूत अलैहिस्सलाम की कौम में आई थी। This was the first, the nation who committed the sin, very first sin of getting close to man. A man gets close to a man. They used to like, for their own physical needs, they used to fulfill their needs from another man, rather than going close to their own wives. अब क्या हुआ, बल अंतुम कौम मुसरिफून, तो फिर आप फरमाया कि तुम शहावत करते हो, हकीकत ये है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। You have crossed all the limits. You are amongst those people who cross the limits. And now फिर अल्लाह फरमाया वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून. And then the qawm of Lut al-Islam, people of Lut al-Islam, turned around and said, because they had nothing to answer, they said to Lut al-Islam that Lut al-Islam, out of taunt, they said to Hazrat Lut al-Islam that you're the only pious person live here, we are all bad people, so what are you doing in our valley, what are you doing in our town? Just get out of our town. जब उनके पास कुछ बात नहीं, कोई जवाब नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि आप जाएं हमारे इससे निकल जाए हमारे शहर से, अगर आपको लगता है कि हम बुरे लोग हैं, then why are you, तुम ही एक नेक रह गए यहाँ पे, तो निकल जाओ तुम भी। فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ, तो फिर हमने नबी के जो है उनके घर वालों को निकाल दिया सिवाय उस बूढ़ी औरत के, कानत मिनल गाबिरीन, फिर वो पीछे रहने वालों में रह गई, then she stayed. अब कुरान के हुक्म है कि आपकी जो बीवी थी वो पीछे रह गई, उनके साथ रह गई। इसके बारे में वो भी इंशाल्लाह discuss this in a short while. Now, what happened? Hazrat Lut al-Islam used to worship Allah subhanahu wa ta'ala and used to preach to these people. He used to tell these people that stop doing the sins that you are committing. You have all the possible bad deeds you're doing, and you're committing all the possible sins that even human can even think about. You're committing, you're doing shirk, you're worshipping idols, you're robbing people, you're killing innocent people, you're disturbing the people who's traveling by your town, you're robbing people traveling by your town, and you fulfill your needs with another man rather than going to your own wife. You have my daughters. So Nabi alayhi salam ने जब कहा कि ये तमाम बेटियां नबूवत में नबी की तमाम तो औलाद नबी की होती, नबी की बेटियां की जैसी होती, तो he said कि you have my daughters in your houses, meaning you have your wives in your home and you leave them alone. और कुछ लोग इसको भी गलत अंदाज पेश करते हैं कि हज़रत ने लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी अपनी बेटियां तो हबशियों के पास जाती हैं, your own wife go to non-believers, go to someone else, and you are fulfilling your needs with somebody else. ऐसा नहीं कहा था. He did not say anything like this. Instead, he said to them, you're leaving them at home, where Allah made them for you to fulfill your needs and look after them, and you leave your wives and children, your wives at home, and then you're going out and doing all the sins, and you fulfilling your needs from the man. मर्दों से तुम्हें ये इस तरह की हरकतें पूरी करनी है, क्या तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बनाया नहीं? तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारी बेबियां बनाई या औरतें बनाई है, तो आप अपनी जितनी भी जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं तुम उनसे पूरी कर सकते हो. You can fulfill your needs from your wife. So why don't you go close to your wife? But people did not listen. They used to commit all the things. They used to say, they used to disturb the people. आपको झुठलाते थे. लूत अलैहिस्सलाम को बड़ा तंग किया. जब लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि भाई तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ, come towards Allah subhanahu wa ta'ala, otherwise the punishment will be there and you will get punished by Allah subhanahu wa ta'ala. जब लोगों ने बात नहीं सुनी, they didn't listen to Hazrat Lut al-Islam. Hazrat Lut carried on preaching them, but they did not listen. The narration says that there was 4 towns where Hazrat Lut al-Islam was preaching, and amongst those 4 towns, each town people used to be about 100,000 people used to live in each town. Some say there were 7 towns, some say there were 3 towns. In total, either the number of people who lived there and who were busy doing these things and Hazrat Lut al-Islam preaching them, they were either 400,000 or 4 million people were living in them towns. तो आप 4 लाख थे या 40 लाख वो लोग थे जिनको आप
तबलीग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी ने कोई बात नहीं सुनी. Nobody listened to Hazrat Lut alayhi salam. And then जब अल्लाह का हुक्म हुआ, when Allah did the order and he sent his angels down, लोगों ने बात नहीं सुनी. तो फिर आपने बड़ा बार समझाया. I tried to explain to them that what the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala will come to you. Listen to me, follow me, and I will save you from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And leave all the bad things. सब कुछ छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है. There is nothing, and I don't have no need for your money. I don't need anything from you. All I want you to follow me. I am the true prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. But they did not listen. उन्होंने सुनी नहीं, कोई बात नहीं, बात चली. बहरहाल बात आगे चली. उनकी एक शरारत के बारे में आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, so you get the background of what kind of people they were and what kind of sins they used to commit. Once Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat Saira, this is written, this narration is written in Torah. ये उनकी किताबों में से, हमारी हदीस में कहीं इनका कोई जिक्र नहीं है. So ये वहाँ से सिर्फ बताने के लिए, so you have the background of those people, what kind of people they were. तो Hazrat Ibrahim alayhi salam और Hazrat Saira सलामुल्लाह अलैहा, इन्होंने एक गुलाम को अपने को भेजा कि they sent their slave to go and ask Hazrat Lut alayhi salam if he's okay, just go check upon him. He was coming to Lut alayhi salam, and when he was coming on the way, when he entered in the town, just while he was entering the town, there was somebody who was walking from the other side, the person from the town. He picked up a stone, he threw on the head of that slave, and the slave started bleeding. After उसके जिस्म से उसको सर से खून निकलने लग गया. उस गुलाम के जो हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम ने भेजा था, the person sent by Hazrat Ibrahim salam, his head started to bleed, and then the person turned around and said, "Look, because of my stone, your head started bleeding, and your red blood came out of your head. Now your whole body is red. I did that to you. Now you have to pay me." अब ये तो वो बात होगी, एक चोर और ऊपर से चितर, एक तो पत्थर मार के उसका सर फोड़ दिया. फिर उनसे कह रहे हैं कि अब तुम हमारे शहर में आए हो, तो मैंने तुम्हारा सर फोड़ा है. क्योंकि मैंने तुम्हारा सर फोड़ा, उससे खून निकला, और खून से तुम्हारा जिस्म सुर्ख हो गया है, तो now I want you to pay me for this. तो जब झगड़ा हुआ बड़ा, when the fight became bigger, then they took him to the qazi, the judge who was there at that time, जो उनका अपना जज था, उसके पास ले गए कि जी ये मुझे मुआवजा नहीं दे रहा. He's not paying me because I throw a stone on his head started bleeding, now it became red. अब खून निकल रहा था, तो कहा कि ये देखो मेरी बात नहीं मान रहा, तो मुझे मुआवजा नहीं दे रहा. He's not paying me for throwing a stone at him. तो अब वो जज ने फैसला किया. जज ने कहा कि yes, now वो slave से कहा, गुलाम से कहा, now he said, the judge said to slave, yes, you have to pay to him. This is the rule of our country, our land. So you have to follow it, because he did that, so you pay. You have to pay such amount to him, otherwise you can't go, otherwise you're going to get punished. And then the slave became really annoyed, and he thought, ये कैसा कानून है, ये क्या चीज़ है, what is going on here, what kind of law is this? Instead of punishing him, you're telling me that you're going to give me punishment and I have to pay him. तो ये क्या चक्कर है? फिर जब उस गुस्सा चढ़ा, they didn't listen. So what the slave did, he picked up a stone, he threw the stone towards the judge, and judge started bleeding. जज के सर पे पत्थर मारा, तो जज के पत्थर जो है उसको खून निकलने लग गया. तो जज से फिर उस गुलाम ने कहा कि because now I throw stone at you, this is your law of your land that says कि जिसको पत्थर मारेगा, तो पत्थर मारने वाले को मुआवजा दिया जाएगा जो पत्थर खाएगा. अब मैंने तो पत्थर मारा है, now it's your duty to the judge, to you money you're going to give me, instead of giving me, you give the money to him. And फिर वो गुलाम वहाँ से भाग गया, he ran away. So this gives you an idea what kind of people they were, and they had their own laws they used to follow, and they used to openly sit, and they used to go out openly in the street in public, and this is where they used to do zina, man with a man. They do it openly. They used to walk wherever they want. They used to leave their setup open. जब नीचे से कपड़ा नहीं पहनते थे, कवर नहीं करते, they used to, whenever they want, they can open their shalwar of the pant and then leave them on, and they used to walk naked whenever they feel like it. They used to talk whatever they want to talk about, and then they started doing these evil things in public openly, and they used to talk about this openly, and इसकी गाली दो, किसी को कुछ कहो, किसी के साथ कुछ जुल्म ज़्यादती, whatever they could do, they did whatever they could possibly do. फिर जब
उन्होंने को बात नहीं बनी तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ कर ली। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम made दुआ and then angel came to हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। Now अब जब वो लूत अलैहिस्सलाम के पास आने से पहले वो फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। Those angels before they came to Hazrat Lut al-Islam, before that they went to Hazrat Ibrahim al-Islam to give the good news of son Hazrat Ishaq al-Islam. जब आप वहाँ गए, वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा और आपको पहचाना और आप उनसे बात की, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि किधर जा रहे हो। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो लोगों ने उन फरिश्तों ने कहा कि हमें इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए भेजा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला sent us to destroy the nation of Lut al-Islam. So Allah said, before we go there, we are here to give you a good news of your son Hazrat Ishaq al-Islam. अब उन फरिश्तों में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम थे और इसराफील अलैहिस्सलाम थे, और एक रवायत में और दूसरे भी फरिश्ते का नाम भी आया है। अब जब उन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे बात की, he spoke to them that why are you going to punish the nation of Lut al-Islam? Is there not 40 people or 400 people or 40,000 people who believe in Allah? They said no. आपने कहा कि अगर कुछ क्या 40,000 या 4,000 या 40,000 या 400 बंदे अल्लाह के वहाँ नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं है। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम then asked, if there are 400 people or 4,000 people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala in that town, would you punish that town? The angel said, no, we will not punish. And then Hazrat Ibrahim अलैहिस्सलाम said, if there are 40 people, would you still punish them? They said, we will not punish, we will not destroy the nation. Then Hazrat Ibrahim अलैहिस्सलाम said, if there are 4 people, would you punish them? अगर 4 लोग हो क्या फिर करो? कहा फिर भी नहीं करेंगे। फिर कहा अगर एक भी शख्स हो तो तब भी करोगे। Even if there is one person live in that town who pious, who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, who worship Allah subhanahu wa ta'ala, would you still punish all of them? Angel said no. So then Hazrat Ibrahim अलैहिस्सलाम said, then Hazrat Lut al-Islam is there, so at least that believer is there, so just leave them, let me, maybe with the time, what if they believe in Allah subhanahu wa ta'ala? But the angel said no, because Allah has given us the order and Allah knows the best, and He knows that these people will not believe in Lut al-Islam. He's been worshipping for a while, He's been preaching these people for a while, but these people are not going to listen to them. Now there is nothing. Then an angel gave the answer, قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا. Then now we know how we are going to do this, and how many people actually there, and who actually believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Now there is an order for Allah, so there is no believer other than Hazrat Ibrahim al-Islam. तो जब आपने ये कहा तो आप आगे, फरिश्ते आगे. Now angel came in a very beautiful human shape. बहुत खूबसूरत और young लड़के बनकर आए. And this was the weakness of those people of Lut al-Islam, the nation of Lut al-Islam. That's why wherever they used to see a young boy, they used to run after the boy and they used to rape him. उन उस बच्चे के साथ ज़्यादती किया करते थे, तो गंदे काम किया करते थे, तो ये उनको करते थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्ते ये, they all came in a form, in a shape of a human being, and very beautiful young boys बनकर आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने आपको देखा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, there are different narrations here. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम was working in the field. आप अपनी बेटी के साथ काम कर रहे थे. He had 2 daughters, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, and he was working in the field when he saw these guests coming. अब इस पे भी अजीब रवायात हैं, 2-3 हैं, मुख्तलिफ किस्म की हैं. तो उनमें एक रवायत तो ये है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आप उस खेत में काम कर रहे थे, तो आपने जब इनको देखा तो आपने इन फरिश्तों को पहचानने से इनकार किया और आपने कहा कि आप चले जाओ, मैं तो नहीं मेहमान नवाजी करूँगा. He refused them to make them his guests, and they said, I will not keep you because he had the fear that what if these people do something wrong to these to my guests, then Allah will question me that we could not look after these guests. तो एक वजह तो बताते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जब अगर ये बात वजह बताते हो, साथ में वो इतराज़ भी कर देते हैं. At the same time, they say, oh, see, if Lut al-Islam had to know ilmul ghaib, he would have known these are not ordinary people, they're angels. So it can be, लेकिन ये बात सरासर हकीकत के खिलाफ है, क्योंकि कुरान में भी ऐसा कुछ नहीं है और सुन्नत में भी ऐसा कुछ नहीं है.
और दूसरी जो रवायत है वो ये कि जब आप आए तो आप परेशान हुए. हजरत लूत अलैहिस्सलाम became worried that angels came in a boy's shape, in a very beautiful shape, and they called me a young boy. And these people here, they rape boys, and whenever they see a boy, whenever they see a young person, whenever they see even a traveler who's walking by, they used to do wrong things to that boy. So आप ये तमाम फरिश्ते बच्चा बनकर आए, यंग लड़के की तरह आए हैं और बड़ा खूबसूरत बनकर आए हैं, तो ये लोग तो बड़े हैं. और हजरत लूत अलैहिस्सलाम quickly took them inside the house. हाफिज़ इब्न कसीर फरमाते हैं कि आप इनको अंदर ले गए, चुप करके ले गए. Nobody found out कि आपके घर को मेहमान आए हैं. तो then amongst them, अब यहाँ आती है आपकी बीवी की बात. Now the wife of Hazrat Lut अलैहिस्सलाम, that this is where it comes. अब इस पे मुख्तलिफ रवायात हैं. Many रवायात says that the wife of Hazrat Lut अलैहिस्सलाम, if Hazrat Lut अलैहिस्सलाम married her before, when Hazrat Lut अलैहिस्सलाam was with Ibrahim अलैहिस्सलाम, before he came to this town, if he married, then she did the hijrat with Hazrat Lut अलैहिस्सलाam, and she stayed. And when she was in amongst these people, at that time she became one of them. जब वो औरत जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, वो आपके साथ हिजरत करके आई, यहाँ रही, तो यहाँ जब रहती थी तो इन लोगों की तरह ही हो गई. इन लोगों के साथ रह के इनकी जैसी ही हो गई और लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना छोड़ दिया. She stopped believing in Lut अलैहिस्सलाम, just exactly like Hazrat Nuh अलैहिस्सलाम's wife, which she got destroyed also. तो उसने भी यही काम किया कि अपना ईमान छुपा कर. हो सकता है maybe this woman also kept her ईमान hidden, इसने भी अपना ईमान छुपा के रखा हो और लूत अलैहिस्सलाम को इसके बारे में खबर ना हुई हो, या अल्लाह तबारक व तआला का ये राज था जो अल्लाह ने छुपाए रखा, या इसको वो सजा मिली कि the wife of Lut अलैहिस्सलाम went outside quietly and told the people, told the nation that there are 3 very beautiful boys as a guest in our house. They're staying there tonight. You can do whatever you want with them. Lut al-Islam hiding them in the house. She went out, she gave the news and then came inside. अब हो सकता है उलमा से this could be the reason because she did that, she did the nafarmani of Hazrat Lut al-Islam and kept her hidden agenda in her heart, and this is where she took her out and she started following those people. She became one of them. तो इस तरह उसने ये किया. तो इसलिए कुछ कहते हैं कि उसने हो सकता है she did that because she thought maybe I may get more reward, I may get more money, और कुछ ऐसा बात बन जाए. It could be anything, or there are other things we will inshallah discuss. दूसरी, अब जब लोगों को पता चल गया, when people found out somehow that either it was the wife of Lut al-Islam told them secretly, or somehow they found out that Lut al-Islam hiding 3 beautiful boys in his house. They came, all the people and mob, they kept coming, and then they started knocking at the door of Lut al-Islam. Lut al-Islam got worried and he thought, these are my guests and I wish I had ताकत. अब उसके बारे में फरमाते हैं कि जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि काश कि अगर मेरे पास इतनी ताकत होती है. And Allah mentioned that in the Quran. This whole story is mentioned in the Quran. Allah says, لو أن لي بكم قوة أو أوي. अब कहा कि काश कि मेरे पास इनके मुकाबले कुव्वत होती, इला रुकनिन शदीद, तो मैं इनके साथ जबरदस्त कुव्वत से लड़ता. So I would fight with these people and I would stop with my full force, full power, full ताकत. लेकिन इनके पास वो थे नहीं, कमजोर थे, बूढ़े भी हो गए थे. तो फिर सूरह तहरीम में उन्होंने सामने की बीवियों का भी जिक्र किया आगे अल्लाह ताला. लेकिन इस बारे तो जब लूत अलैहिस्सलाम ने, जब लोगों ने आए, छतों को फाड़ने की कोशिश की, they tried to rip the roof and ceiling apart and tried to speak, and Lut al-Islam said, don't do this. Don't you have any fear of Allah? Don't you have any shame in you? Don't you have anybody who understands? Where are your masters? Where are तुम्हारे सरदार? कहाँ पे? किसी में शर्म नहीं है, किसी में अक्ल नहीं है. You're leaving your own wives behind and you're coming here to do wrong thing to my guest. This will not happen. May Allah subhanahu wa ta'ala give me the ताकत and I can fight with you. Don't do this. और फिर आपने एक और रवायत में जिसको कुरान में जिक्र किया है
कि अगर अब यहाँ पर भी दो बातें हैं जिसका जिक्र हुआ हा उलाई भाई बनाती इन कुंतुम फाइलिन। कुछ लोग कहते हैं कि ये आपने अपनी बेटी का जिक्र किया कि some say that Hazrat Lut said, I have 2 daughters. If you want, I can give them in a marry. You can marry my daughter, but don't do anything wrong to my these guests. ये एक तरीका था बच जाने का। कुछ तो कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने अपनी बेटियों का जिक्र नहीं किया था, he did not mention his own daughter, he mentioned the daughter as in the daughter, the wife of those people they at home, they don't even touch their wives for years and years. उनके साथ करीब ही नहीं जाते थे, बहुत कम जाते थे, and then they fulfill their needs with their men. तो the wives will stay home. तो कहा कि हो सकता है कि नबूवत में सभी ये बेटियां होती हैं। अब यहाँ पे बनाती कहा है, this is the siga of more than 2 daughters. If it's 2 daughters, then it is bintain, the word will come. The siga says here it's been more than 2 daughters, so that means Hazrat Lut al-Islam said, because he was the prophet, all the nation, the daughters he had, for him is रूहानी daughters. तो वो इनकी तो रूहानी औरतें बेटियां बनती हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि मेरी बेटियां हैं, तुम उनसे अपनी हवस को ख़त्म करो. If you want to get rid of your physical needs, then you go to your wives, you go close to the daughters for female rather than coming close to male. नहीं सुनी उन्होंने बात. So they carried on. And then Hazrat Lut al-Islam tried to say to these guests, you keep hiding yourself. तो फिर लोगों ने कहा कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम ताकत रखते हैं, we have the ताकत, we have power, we can fight with these people, we are stronger, they can't even harm us, so don't worry about this. And the time also gone past, it was a bit dark at that time, it was evening time, शाम हो गई, वक्त गुजरता गया. अब जब वक्त गुजरा, वक्त के साथ साथ फिर उन्होंने क्या किया कि हज़रत जब वो लोग बाज ना आए, एक रवायत है कि they became successful in breaking the door. दरवाज़ा तोड़ने वो कामयाब हो चुके थे. तो जैसे ही वो अंदर आए, और एक रवायत ये है कि अंदर नहीं आए बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम he went outside and with ताकत of नूरानी आपने अपने पर खोले और जोर से उसको उनके मुंह की तरफ मारे. all became blind. तमाम के तमाम लोग वो अंधे हो गए जब हज़रत जिब्राइल ने अपना पर मुबारक खोला और खोल कर उनकी तरफ ऐसे मारा उनकी आंखों पे, तो तमाम के तमाम they all became blind and then they started running, they started crying and they ran back to their houses. अपने घरों में वो चले गए. उनको जब कोई बात ना बनी तो उन्होंने कहा कि we will see you tomorrow morning. ये रात में कहाँ चले जाओगे? Where will we go in the night? We will see you tomorrow morning. And हम लूत अलैहिस्सलाम को they said whatever they could say to Hazrat Lut al-Islam. They swore at him. They said all the bad things that possibly they can say to Hazrat Lut al-Islam. जितना कुछ कहा जा सकता था उन्होंने कहा, बुरा भला कहा. Hazrat Lut al-Islam को गालियाँ दी और फिर कहा कि हम तुम्हें सुबह देखेंगे और अपने इस इरादे से जब आए तो चलेंगे. जब कामयाब नहीं हुए तो वो फिर वापस चले गए. अब यहाँ और जो बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी लूत अलैहिस्सलाम ने को इल्म नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था, उनको पता ही उस वक्त चला जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया. तो ये कोई जवाब नहीं है. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज हिडन. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने द वन हु वाज मेकिंग दुआ, ही वाज ओनली वरीड बिकॉज़ इट वाज द गेस्ट. ये दिखाना था कि एक मेहमान आए तो उसकी इज्जत और एहतराम कैसे करते हैं. तो इसलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वाज वरीड अबाउट देयर रिस्पेक्ट and then ihtaram, and out of that ihtaram, that's why he was worried. He was not worried about anything. और इसीलिए आपने कहा कि काश के अल्लाह ने मुझे ताकत दी होती, इतनी ताकत होती, मैं जवान होता कि मैं इन लोगों के साथ लड़ सकता. So I could fight with these people. अब जब उन्होंने चले गए, निकल गए, अगले दिन आया. Before the next morning, Hazrat in the night, angel said to Hazrat Lut al-Islam कि आप ऐसा करें कि आप अपना साजो सामान लें, take your thing and leave your house. रात के वक्त आप चले जाएं, रात का वक्त है, leave the house and try not to look back. When you hear something, try not to look back. एक ये कुरान मजीद का भी हुक्म है कि जब आए तो आप वापस नहीं देखना आपने, सिवाय आप चले जाएं अपने बच्चों को लेकर, सिवाय अपनी बीवी के. आप उसको ना लेके जाएं, उसको छोड़ के जाएं.
तो अल्लाह ने, या इसमें दो चीज़ें हैं कि बाज़ कहते हैं there are two things. Some say that Allah ordered them to leave his wife in the house, or some say she left the house but she decided to come back herself and then she stayed there in the house. वो वापस नहीं है, चली गई। Anyway, तो जब वो निकले वहाँ से, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, she started leaving the house, आपने घर को छोड़ना शुरू कर दिया, घर को निकले। अब आपके साथ that was not even a single believer other than Lut al-Islam and his two daughters. आप और आपकी दो बेटियां, इनके अलावा किसी और ने आप पर ईमान नहीं लाए। Not even a single person believed in Hazrat Lut al-Islam. कुछ कहते हैं कि एक आदमी और था, there was another man, लेकिन mostly they say it was nobody apart from Lut al-Islam and his two daughters, and wife also went back. अब अज़ाब जब आना था तो अज़ाब को कैसे आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन तमाम की तमाम बस्तियों को आसमान की तरफ ले जाओ, take all the towns up in the sky. अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर मारा और तमाम बस्तियों को ऊपर को उठा लिया, took all the towns up in the air. Most of the people were sleeping in the houses, they didn't realize what's happening to them. उनको पता भी नहीं चला कि ये क्या हो रहा है उनके साथ और क्या होने जा रहा है। जिस जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 7 की 7 बस्तियां थी उनको उठा दिया। अब कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला यूं फरमाता है, फलम्मा जाअ अम्रुना जअलना अलैहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील। अब अल्लाह तबारक फरमाता है कि जब हमारा हुक्म आया तो हमने उन बस्तियों को ऊंचा उठाया और उठाकर उलट कर उनको मार दिया। Allah says in the Quran, now we raised all the towns up in the air and then we turned them over and then throw on the floor, on the earth. तो ज़मीन पे ऐसा फेंक दिया और फिर यही अज़ाब नहीं आया कि उनको उल्टा ले जाकर कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर बरसाए, फिर फरमाया मिन सिज्जीलिन दम, तो आगे इनके ऊपर पत्थर बरसाए गए और फिर उसके साथ साथ अल्लाह ताला फरमाता है उन पत्थरों अबू मुफस्सिर उलमा फरमाते हैं कि उन पत्थरों पे इनके नाम लिखे हुए थे। Just on those stone which was thrown from the sky, it rained of stones on those people, and then it rained and every single person's name was written on each stone. और उन लोगों के ऊपर उनकी बस्ती को उल्टा करके तबाह कर दिया। Then Allah subhanahu wa ta'ala stoned on those people, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। उनको पत्थर बरसाने के बाद हर बंदे का पत्थर के ऊपर नाम लिखा होता है, every person's name written on the stone. जिस को वो लगता वो वहाँ पे मरता जाता। Whoever got hit by that stone, they used to die there. उनको फिर और एक आवाज और फिर एक और आयत में है कि आपकी जोरदार चीख सुनाई दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चीख निकाली and they all got scared, and then Allah Jibreel took all the towns in the air and then turned them over and threw on the floor on the earth, and then rain started off stones, and each stone had the name of the person who meant to die with that stone. अब उसको गलत कैसे किया? Then Allah subhanahu wa ta'ala took all those valleys, all those towns and drowned them in the sea. पानी में डुबा दिया और कितना ले गया? 400 meters down below the sea level. Normal जो है ऊपर उलमा मुफस्सिरीन, and even now science says a normal fish which lives above on the upper level of the sea, if that fish goes down, it dies there. And especially in that area which is called Som, या जिसको बता सदूम, ये जो इलाका था, that town today, if we go there, there's nothing but water, and that water is completely unusable. It's very salty, it's like poisonous, and nobody lives there. There's nothing there but water. When people the divers did the tahqiq, they found out that the town is still there. It was turned over and something happened, and Allah raised the level of water. वो अपनी तहकीक पेश करते हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि अल्लाह ने उनको आसमान में उठाया और आसमान में उठाने के बाद उनको उल्टा करके ज़मीन पे फेंका और फिर उन पर पत्थर बरसाए गए. Then Allah subhanahu wa ta'ala stoned them and all of them died with that punishment.
देन अल्लाह आगे भी उनमें ये फिर सूरह नजम में भी इनका इशाद होता है कि जो है इन्होंने ये बुरा काम किया, और अल्लाह ने जो किया गया वल मुत्तफिकातु अहवा फगश्शाहा मा गश्शा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो जिसमें ये दूसरी आयत सॉरी फबिअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा, कि तुम अल्लाह की जो जो अल्लाह ने तुम्हारी नेमतें दी हैं उन पर कौन कौन सी नेमत पर झगड़ा करोगे, and how many ne'mat that Allah has given you are you going to fight about? Don't you remember those people, those towns that we turned them over, and then we reigned over those people of stones, पत्थरों से उनके ऊपर बारिश की, और फिर then they got destroyed, there was nobody left behind. अब उसमें आता है उलमा say that whenever there were some people, they were not in the town, they were out of town. Stone hit those people wherever they were and they died there. जहाँ जहाँ वो लोग थे, wherever they were, कुछ लोग वहाँ उस इलाके में उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो जहाँ भी वे थे अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर वही पत्थर बरसा है. So they were either 4 million people, 40 लाख लोग थे, या 4 लाख लोग थे. Minimum they were 400,000 people, maximum 100,000 people or 4 million people. इतने लोग थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह किया. अब लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में आता है, या फिर ये इस वजह से अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को मना कर दिया था. Either Allah subhanahu wa ta'ala said to the wife of Lut अलैहिस्सलाम not to go, Allah to Lut अलैहिस्सलाम not to take a wife, she is amongst those people. And one says that she walked out, but in the middle when she heard the voice of Jibreel अलैहिस्सलाम when he screamed, जो ज़ल्ज़ला और खौफनाक आवाज़ एक आई, जिसका हुक्म जिसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वो आवाज़ आई, and she heard the voice, because Allah ordered not to look back, she did not listen to the order of Allah subhanahu wa ta'ala, that's why she got distressed, she turned back, तो उसको भी एक पत्थर आके लगा and she died there. And one says that she went back, she refused to go with Hazrat Lut al-Islam, and then she died like this. And one says is because Allah knew that she did not believe properly in Hazrat Lut al-Islam, and she is still amongst those people, she is mushrika, या वो जो फरिश्तों की खबर लोगों को देकर आई थी, because she leaked the news of angels staying in the house of Lut al-Islam. That's why Allah punished her. Whatever the reason was, ये उसके लिए अब जो उन्होंने हिजरत की थी, उस हिजरत का तो कोई फायदा नहीं है. कोई भी नेकी करो, whatever good deed you do, if you do not have belief in Allah, your deed will not benefit you. कोई भी काम करो, चाहे बड़ा ही अजीम काम क्यों ना हो, अगर खुदा पे यकीन नहीं है तो उस अजीम काम का तुम्हें खुदा के हाथ से कोई अजर नहीं मिलेगा. You will not get rewarded for anything if you do not have belief in Allah subhanahu wa ta'ala. Now, Allah mentioned about the wife of Lut al-Islam and the wife of Nuh al-Islam in the Quran Majid, Furqan Hamid, At-Tahrim Surah. Allah said, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. और अल्लाह ने काफरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान की है. Now the example Allah has given for the non-believers, that the nisbat or amar will not benefit you. Even the wife of Nuh alayhi salam, being the prophet, and she was the wife of Lut and Nuh alayhi salam, and the wife of Lut alayhi salam, even them got punished because of their not believing in Allah. So now their deeds are no good to Allah. उनके अमाल कुछ नहीं है. Doesn't matter what they did in their life. They were the wife of आप देखो अज़ूर की और अज़वाज को देखो, उम्महात है मोमिनों की. लेकिन अगर उनमें से कोई ईमान नहीं लाती, if she didn't believe in हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई भी नबी में कोई भी औरत ईमान, तो अल्लाह फरमाता है कि उनकी मिसाल फिर दी है काफरों के लिए कि तुम तो काफर हो, you don't even believe in me. And those wives who believed openly that they believed in one Allah, they were wives of those prophets, but inside they did not believe me. Inside they were amongst those kuffar. Even those women got punished. What about you? You're openly committing shirk. You're openly kafir, you're openly non-believer. तो तुम्हारा क्या हाल होगा जब नबियों की बीवी के साथ ऐसा होता है? तो ये अल्लाह ने मिसाल
आप इनको दी और इस बारे में आपको बताया। अब वहाँ अगर आज भी जाए लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में, there is no नाम और निशान, there is no sign, nothing apart from just water, and the people who died that they know it's 100 meter, 400 meter under the sea, ये समुद्र के अंदर है, तो इनके वहाँ आज पानी ही पानी है, पत्थर बरसाएंगे इनके ऊपर। अब यहाँ सजा के ऊपर बात होती है। The people who have who do this, they have attraction between same sex, या जो है एक ही जिन्स के लोगों से उनको रग़बत होती है, who are attracted to one kind of male, female, इनकी सज़ा तो हुज़ूर पाक ने फरमाया according to हदीस मुबारका, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, if you see people doing the same sin as the Lut alayhi's people did and the nation of Lut alayhi did, kill both of them, the one on top, one who's under, जो ऊपर है उसको भी मार दो, जो नीचे उसको भी मार दो, ये सज़ा है। और हज़रत इमाम अबू हनीफा, he says the punishment of those people, take them on the highest mountain, throw them from there, and when they come on earth, जब वो ज़मीन तक पहुँचे, then throw stone at them and stone them to death। ये सज़ा है इस्लाम ने जो कायम की है, इसलिए कि जो मर्द, क्योंकि अल्लाह has created you in pairs, और अल्लाह की नेमत को झुठलाना ये गलत काम है, और ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था, और आज वही चल रहा है। हमें हमारे बच्चों के साथ भी जुल्म किया जा रहा है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। We have no problem with what other people do, what they believe in, what they want to do, but we don't want anyone to teach our children these kind of education, and we need to speak up against this। बात करनी पड़ेगी, ये तो नहीं है कि हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, हमारे बच्चे हैं, हमने we need to decide for their future। There's no one can do this better than the parents of the child। हमें, और अगर किसी को कोई रखना है, कोई ताल्लुक रखना है, ऐसी चीज़ें पढ़ानी है, करनी है, वो करें, अपने तक कर रखें। Why are you interfering in our religion? हमारे मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, इन चीज़ों को ज़रा समझो। Remember this, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, I do not have fear of my ummah will commit shirk, they will become mushrik, but I have fear that my ummati may not, what if they go towards what Lut al-Islam's qawm, the nation of Lut al-Islam did. I have tiny bit of fear that they may, or some people may go towards that. And then the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala is great. तो ये ज़रा सोचना कि इंसान दुनिया में तो बाज आ सकता है, you can get away in this world. Remember, nobody's here forever. You have to die, and when you die, this is the moment. You need people, and the people who die in this kind of situation, इनका तो बाज कहते हैं जनाजा भी ना पढ़ा ऐसे लोगों का। But anyway, when you die, when you go in your grave, the punishment will come to you. What would you answer at that time? That you're rejecting the bounties and rewards of Allah subhanahu wa ta'ala, but not by doing these things, you're rejecting them. And when Allah made you in a beautiful shape, and then just have the rahmat with those people, opposite sex, not the same sex. There's no such a thing in Islam. बाज़ लोग अपने आप को कहते हैं कि हम ऐसे हैं, मैं तो ये भी हूँ, and unfortunately we are that these things happening in some of the Islamic countries, and there are people marrying from the same sex. ये तो नहीं है इस्लाम में. There is no place for this kind of thing in Islam. Yes, if someone does, we don't care what that person does. We know about ourselves, and we need to protect ourselves. We need to protect our children. If someone does, it doesn't matter. It's between them. Whatever they do is their deed. They have to answer. But we need to know that we don't want this for our child, our daughter, our son. अपने खानदान में ऐसे बीमारी नहीं पैदा होना चाहते. अगर हम खुद कोशिश करें, if we do work hard on our children, हम उनकी खुद परवरिश करें, अच्छे तरीके से करें, we keep an eye on them, we ask them questions, we give them freedom. Freedom doesn't mean they go out and do all the wrong thing. This is not freedom. अगर बाहर जाना हो तो आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि औरत ये मर्द कपड़े उतार के बाहर घूमने फिरने लग जाए. This is not freedom. If you want to take your clothes off and then call it a freedom, this is not freedom.
Unfortunately, this is called एक गंदगी है. ये नहीं है कि इंसान क्या कर रहा है. मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा जो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. This is filth. This is nothing else. It's just a filth. If you think this is freedom, it's not a freedom. Freedom means you cover yourself. You don't become a person which is where people can look and then think wrong about you. गलत सोचे, गलत ख्यालात उसके दिमाग में आए and then वो उल्टी सीधी बातें करे. This is not freedom. Freedom is that you respect yourself, respect your body, respect your dignity. अपने आप को इंसान संभाले. अगर इंसान ने इसी तरह करना है तो फिर क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का कि जो मर्जी पहने या कपड़ा उतार दे, जिस्म को नुमाइश करना, ये कुछ नहीं है. Showing off your body is nothing. ये तो इंसान की नज़र से गिर जाता है इंसान जो ऐसा करता है. When something is hidden, people want to see it. People want to meet the person who keep himself highly hidden. But people who are openly going out and about, they don't really pay attention. उसके पर कोई नहीं होता. तो इसलिए अपनी खुद कदर करें. हमारी माओं से भी गुजारिश है, बहनों से भी गुजारिश है. This is a request from my sisters, my daughters, my mothers. Listen, this is not part of Islam. You do what you want to do. You do what you think is right to do, but do not cross the limit which Islam has created for us, which Islam has set for us. We do not need to cross that line. The moment we cross, there is nothing but distraction. In this dunya and hereafter, punishment is punishment, and then hellfire. We can't, if you want to feel the heat of hellfire, then just put your hand for a couple of seconds on a real fire in your own house, and then you'll feel the heat. Imagine the heat on the day of judgment is far greater than the heat in this dunya. This is, the ulama says, this is like a piece of sand compared to the real fire, hellfire. उसके नज़दीक के कुछ भी नहीं है. एक रेत का ज़र्रा है ये. The fire in this dunya is just this much. तो उस आग से बचने के लिए हमें अपने आप को संभालना है. We have to look at our deeds. We have to protect ourselves. We have to protect our children. हमें दीन को समझना है. We need to understand deen. We need to follow deen as much as we can. At least you don't do something good, but at least don't do wrong either. गुनाह तो मत करो. Keep yourself safe from these kind of wrongdoings. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand and learn about Quran and Sunnah. आज का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है. Today is also the yom of Hazrat Khadija al-Kubra. She passed away today on 10th of Ramadan. And Hazur Nabi sallallahu alayhi wa sallam uncle passed away. Hazrat Abu Talib passed away about 3 or 5 days before in the month of Ramadan. Hazur sallallahu alayhi wa sallam called this month either the Shahr al-Huzn, the month of sorrow. Or that year, Jesus Hazrat Nabi sallallahu alayhi wa sallam called the whole year Amul Huzn, the year of sorrow. ये इस तरह के चली. हजूर नबी sallallahu alayhi wa sallam used to love his wife Ummul Mu'mineen Hazrat Khadija al-Kubra, who believed in Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And when revelation happened, हजूर नबी sallallahu alayhi wa sallam told her the first. वो उनको सबसे पहले पता चला था कि आप अल्लाह के नबी हैं. And she was the first from the women who believed in Huzur Nabi sallallahu alayhi wa sallam. तो उनको भी ज़रूर याद रखना. उनके वसीले से अपने लिए दुआ मांगे. And make dua for with the wasila of Sayyida Khatun al-Jannah, Sayyida al-Nisa Fatimah Zahra. Make dua with the wasila of Sayyida Khadija al-Kubra. Make dua for with the wasila of Sayyida al-Mu'mineen Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. Make dua with the wasila of Huzur Nabi sallallahu alayhi wa sallam and his companions, and make dua with the wasila of all the Anbiya Karam alayhi salatu wasalam, that may Allah subhanahu wa ta'ala protect us, protect our children, protect our family, protect our dignity, protect our respect, protect our coming generation and nations. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq with their wasila to learn and understand Quran. Wa ma alayna illa al-balagh.